dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 3. This is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 3 and the name of the chapter is Let's Learn Paint in 3D. So children, in this chapter we are going to learn about the paint program and in 3D form. So children, do you know that we can also draw 3D pictures in computer using the Paint 3D software? Let us learn about it. So in this chapter, children, we are going to learn about Paint 3D, starting Paint 3D, components of Paint 3D window, creating 2D shapes, creating 3D shapes, selecting a shape, changing color of the shape, adding text, saving our drawing, opening our saved drawing. So, Paint 3D is a software in which you can draw such 3D shapes. So, in this Paint software, we can draw 3D images. Let us learn about more in this program. First topic is that is Paint 3D. With all the earlier versions of Microsoft Windows had included a simple paint program. So जितने भी पुराने वर्जन्स थे विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट ने उसे जो है आप एकदम सिंपल फॉर्म में करके पेंट प्रोग्राम बनाया है. यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू वर्क ऑन इट. हमें पहले से पता है पेंट में कैसे वर्क करते हैं. यू हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑन इट. आपने ड्राइंग्स बना रखी है. In Windows 10, a new version of Paint called Paint 3D has been included. In Paint 3D, you can create and edit 3D images. So, Paint 3D में हम 3D images को बना सकते हैं. Starting Paint 3D. How can we start Paint 3D? To start Paint 3D, follow the given steps. First, we have to click on the Start button. Here is our Start button given here. Now, scroll to find P and click on Paint 3D program. So, this is the icon of Paint 3D. We have to scroll to P. P पे जाना है. P सर्च करना है. Paint 3D भी सर्च कर सकते हैं हम यहाँ पे. And then we can start Paint 3D. Now, click on New option to create a new drawing. So, Paint 3D की स्क्रीन हमारे सामने आ गई है and उसमें हमें New option पे क्लिक करना है जिससे कि हमारे ड्राइंग एरिया खुल जाएगा. Now, components of Paint 3D window. The main components of Paint 3D window are listed below. So, this is our 3D window and here are the components. First is our title bar. This is our title bar. Below that is our menu bar. टाइटल बार क्या करता है? इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ ए प्रोग्राम. प्रोग्राम का जो भी नाम है, जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो होता है जिससे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज आवर मेन्यू बार. इट डिस्प्लेज ऑप्शंस सच एज न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव एंड सेव एज. सो इन द मेन्यू बार में क्या है, हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. Next is options tool. This is our options tool. It displays options such as select, crop, magic, select, 3D view, mixed reality and zoom slider. So ये जो options यहाँ पे लिखे हुए, these all are available in the options tool. Next is our brushes tool. It displays brush option and color palette. तो brush यहाँ से हम ले सकते हैं और color palette भी हम यहाँ से मिलेगा जिसमें हम बहुत सारे colors को choose कर सकते हैं. Next, here we can see 3D shape tools are here. It displays options like 3D library, 3D doodle, 3D objects and 3D models. So ये सारी चीजें हमें यहाँ पे 3D shapes में मिलेंगी. Here, this part is called our names toggle tool. It is an option for hiding, showing the name tool name. So यहाँ से हम अपने tools के name को हम hide या फिर show कर सकते हैं. And the last one is our canvas, जहाँ पे this is the area जहाँ पे हम drawing को बनाते हैं. This white part, this white area is our canvas जहाँ पे हम अपने drawing को बनाएंगे. Now, creating 2D shapes. How can we create 2D shapes? 2D shapes तो हमें बनाना आता ही है.
Now, creating 2D shapes in Paint 3D is similar to Paint. So, 3D Paint 3D में हम 2D shapes कैसे बना सकते हैं? सेम वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम Paint में बनाते थे. To create 2D shape, follow the given steps. Click on the 2D shapes tool. So हमें 2D shape tool पे क्लिक करना है. Then select the desired shape you want to draw. तो जो भी हमें shape चाहिए हमने इसमें से select कर लिया जो भी shape हमें बनाना. Drag the pointer on the canvas. तो हमने shape को select किया. अब हम pointer को यहाँ ले आए और उसे ड्रैग करना है. माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके उसे खींचना है हमारे कैनवस पे और देखेंगे हमारा शेप इतना बड़ा हो गया. नाउ क्लिक ऑन द कमिट बटन. सो यहाँ पे हमारे कमिट बटन जो है दिस टिक मार्क इज अ कमिट बटन. इस पे क्लिक कर देंगे इसका मतलब वो फिक्स हो जाएगा वहीं पे, वो शेप वहीं पे फिक्स हो जाएगा. टू रिवर्स योर एक्शन यू कैन मेक a mistake while drawing. Press Ctrl Z. So अगर मान लो कुछ भी ड्रॉ करते समय हमसे कुछ गलती हो जाए so हम Ctrl+Z दबा देंगे और वो गलती वहीं पे इरेज हो जाएगी, मीन्स अंडू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. When you draw a shape in the canvas, a dotted boundary around the shape can be seen. It contains grab point. So जब भी हम ड्रॉ करते हैं shape on a canvas, कैनवस पे शेप डालते हैं, a dotted boundary around the shape can be seen. जो भी शेप हमने बनाई है उसके चारों तरफ we can see there is a dotted boundary. डॉट डॉट लगी हुई है और बाउंड्री बनी हुई है. It contains grab points. So इसमें हमारे grab points होते हैं. These are 3 tools. So यहाँ पे we can see हमें 3 tools दिखाई दे रहे हैं. First is our rotate tool, जिसकी वजह से हम ड्राइंग को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं. Next is our stamp tool. It looks like a stamp की तरह दिखता है. And it is also called clone tool. Creates the copy of the shape. So जो भी shape है उसका जो है copy बना सकता है stamp tool. Commit, which is displayed as check mark, is for completing the shape. So मान लो हमारा shape complete हो गया तो हम commit पे click कर देंगे जिससे कि ये sure हो जाएगा work is done. You can change the color, background, texture of the shape and the thickness of the line. Also you can rotate and flip the shape. So जो भी हमारे टेक्स्ट ये सारी चीजें कलर, बैकग्राउंड या टेक्सचर ये सब चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. और ऑल्सो वी कैन रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. ऑल्सो वी कैन फ्लिप द पिक्चर ऐसी थी अब वो ऐसी हो गई. नाउ क्रिएटिंग 3D shapes. How can we create 3D shapes? Here we can see some we have to go to first to the 3D shapes option, 3D shape tool. Now click on the shape you want. So जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे this box will open in front of us. जो भी shape हमें चाहिए उस पे हम क्लिक करेंगे and click and drop the pointer to draw the shape. और इस pointer को हम यहाँ लेके आएंगे और हम इसे drag करेंगे और we can make the shape. So here we can see this is a 3D shape. We have selected this. You see a 2D shape drawn with 4 handles around the shape. तो शेप के चारों तरफ जो है we can see 4 handles जो 2D शेप में दिख रहे हैं. रोटेट द शेप यूजिंग द रोटेशन हैंडल टू सी द 3D इफेक्ट. सो हमारा जो रोटेशन हैंडल है हमें तीनों तरफ दिख रहे हैं, रोटेट हम कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. सो उसके मदद से वी कैन रोटेट द शेप. सो पहले शेप ऐसा था अब वो ऐसा हो गया आफ्टर रोटेटिंग. Now 2D shapes are drawn on the flat surface, so it only displays only 2 dimensions. So 2D shape जो होता है उसके 2 dimensions दिखते हैं, इसलिए उसे 2D कहा जाता है क्योंकि एक flat surface में बनाया जाता है. And क्या क्या dimensions होते हैं? Length होती है या फिर breadth होती है. But when we draw 3D shapes, we can rotate it around to see what is the other end of the shape. Shape का दूसरा हिस्सा कैसा है वो भी हम 3D shape में देख सकते हैं. 3D stands for 3 dimensions, that is length, breadth and height. So shape की length, breadth और height तीनों इसमें हमें दिखाई देती है, इसलिए हमें इसे 3D shape कहते हैं. Now selecting a shape, how can we select a shape? To select a shape, just click on it. The panel changes and displays 2 options to edit the shape drawn. So जो भी shape हमने बनाया है उसको हम यहाँ से select करने के बाद edit कर सकते हैं. Drag the mouse over the shapes to select all types. You can then rotate all the shapes together by moving the rotation handle.
सो एक साथ कई सारे शेप्स को हम सेलेक्ट करके भी एक साथ उसे मूव कर सकते हैं. नाउ लेट्स क्विकली कम टू दिस वर्कआउट चिल्ड्रन. हियर टेक द शेप दैट मैचेस बेस्ट विद द ऑब्जेक्ट बिलो. सो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. दिस इज अ कोन और अ क्यूब. यस, दिस इज अ क्यूब. Cuboid or a cylinder. This is a cylinder. Cone or cube. This is a cone. Cube or sphere. This is a sphere. So these are the answers, children. Now changing color of a shape. अब shape तो हमने बना लिया. अब इसको change कैसे कर सकते हैं उसके color को. Let's see. We can do whatever shape we make in 3D. It will be blue in color. जो भी हम shape 3D में बनाएंगे वो blue color की हमें दिखेगी. बट यू कैन चेंज द कलर ऑफ एनी शेप. लेकिन किसी भी शेप की हम कलर को चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द कलर फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप्स दिए हैं, इन्हें हम फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं शेप को. सेलेक्ट द शेप. क्लिक ऑन एडिट कलर ऑप्शन. तो जो भी शेप है जिसका हमें कलर चेंज करना उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन हियर वी कैन चेंज द कलर from this edit color option. edit color option यहाँ पे है, वहां पे हम क्लिक करके और हम जो भी कलर इसमें से चाहिए उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. You can also add more colors by clicking on the add color this plus button. So यहाँ पे हमें add color button दिख रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें से हम जो भी कलर चाहिए उसे यूज कर सकते हैं. Now adding text. The text tool is used to add text in the canvas. Text tool की मदद से हम canvas में text भी डाल सकते हैं. It provides options for 2D and 3D text. So 2D text है तो वो ऐसा दिखेगा, option उसका ऐसा होगा, और 3D text है तो उसका T ऐसा दिखेगा. So we can also change the color, size, shape and alignment of the text. So text की ये सारी चीजें भी हम change कर सकते हैं. To add 2D और 3D text, follow the given steps. चेंज करने के लिए टेक्स्ट को ऐड करने के लिए चाहे वो 2D हो या 3D, we can follow these steps. Click on text tool. text tool पे क्लिक करना है हमें. यहाँ पे देखिए text tool लिखा हुआ है. Next, click on 2D और 3D text tool. अब इसमें जो है हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, 2D या फिर 3D text tool. जो भी चाहिए उस पर हम क्लिक कर सकते हैं. चूज द फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, अलाइनमेंट. ये सारे ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम हियर एंड देन क्लिक ऑन द कैनवस एंड टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. सो ये इसमें से सारी ऑप्शंस को हमने अगर चूज कर लिया और फिर यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया, सो दिस बॉक्स विल कम इन फ्रंट ऑफ अस. उसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो हम उसमें लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे पिक्चर बनाई एक फिश की और हमने ऊपर लिखा है टेक्स्ट टूल में फिश. When you have completed typing the text, click anywhere outside the text box. So जब हमने लिख लिया है तो हमें टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करना है ताकि वो स्क्रीन हमारी बहुत ही सुंदर दिखे. This will open the section tool where you can rotate the text using rotation handles and change the color of the text using the edit color button. So हम जो है इनके जो हैंडल है उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं by clicking on the edit color option. Now here, name the tools. Come to the exercise, name the tools. To open our color palette and brush option, we have to click on the brush tool, children. Write it down. Next one is, it displays the name of the program and the name of your drawing. So कहाँ पे हमें नाम दिखाई देता है? Yes, title bar. Next, to open 3D library and options, to draw 3D shapes, we click on the 3D shapes tool. It is 3D shapes tool. So children, these are the answers for the given workout. Now next, saving the drawing. Now we know how to make the drawing, how to color it, how to insert text. Now let's save our drawing. इतनी मेहनत की उसे सेव तो करना बनता है. To save the drawing, follow the given steps. Click on menu. Menu पे क्लिक करेंगे. Then click on save as option. Type the name in the name box. Name जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे
सेव एज ऑप्शन आएगा, वहां पे हमें नाम लिखना है एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. You can also click on select all button and select all the 3D shapes. So जितने भी 3D shape हमने बनाए हैं उसको select करने के लिए हम select all button press कर सकते हैं. Try it by yourself and rotate them in different angles. So मैंने भी आपको बताया था कि सारे shapes को एक साथ rotate करने के लिए select all button भी हम press कर सकते हैं और उसके बाद सारे shape को एक different angles में आप rotate कर सकते हैं. So here we can see save button is given. Now we have written the name here and then just clicked on the save button to save our drawing. Opening a save drawing. अब drawing save तो कर दिया, अब उसे open करना है. So we have to click on the menu. Menu पे click करेंगे, open option पे click करेंगे and then you can select the file. अब हमने files जो भी बनाई उस पर हमें click करना है. Now you can browse your file from the location where it has been saved. जहाँ भी हमने save किया उस location से हम उस file को open कर सकते हैं. File will be opened in the place of blank canvas. So blank canvas की जगह पे हमारी file खुल जाएगी. Now recall time. Paint 3D is a software in which you can draw 3D shapes. Main components of Paint 3D window are title bar, menu bar, brush tool, 3D shapes, zoom slider, names toggle, brush option, options tool and color palette. You can create 2D shapes by clicking on 2D shape tool. For making 3D shapes, we can click on 3D shapes from the toolbar and you can change the color of the shape by clicking on the edit color option. You can add 2D or 3D text in the canvas by clicking on the text tool and you can save and open the save file by clicking on the menu option. So this was the recall time, children. Now let's quickly come to the book exercise. Check the correct option. Which of the following displays the options such as new, open, insert, save, etc. So it can be seen in the menu bar. Which tool has an option for toggling the tool name on and off. So we can toggle the names in the names toggle tool. Which of the following handles help you rotate all the shapes together? So by using the rotate option we can rotate all the shapes. And the last one is on which bar is text tool present. So where is the text tool present? It is present on the title bar. So these are the answers, children. Now let's quickly come to the fill in the blanks. Dash displays the name of the program and the name of your drawing. So it is the title bar. Displays the name of the program and the name of your drawing. Dash is the area where you can create or draw your shape. So we can create and drag our shapes in the canvas. Dash is also called the clone tool and it creates the copy of the shape. So stamp tool is also called as clone tool. The color in the shapes can be changed by clicking on the dash option. Yes, we have to click on edit option, edit color option. Next, answer the following questions. Name any 3 components of Paint 3D window. So children, the 3 components of Paint 3D window are menu bar and we can say brush tools and also edit colors. So these are the 3 components of Paint 3D window. What is the use of commit button? So commit button is used to make sure that it looks like this and it makes us sure that our drawing is completed. So after completing the drawing, we click on this commit button so that we can be sure that our drawing is completed. Now write the steps to add 2D text and write the steps to add 3D text. So
there is the same way of writing 2D and 3D shapes, text. For inserting the 2D text option, we have to go on the first, we have to click on the 3D shapes option, and from there we have to click on the text tool. In the text tool, we can choose 2D if we want to convert our text in 2D text, and if we want to change the text in 3D, we have to select the 3D option from there, and then just fill in the text style and the alignment, shape, size. Every options can be filled related to the text there, and after that we have to click on the canvas, and there a box will come of dotted lines. In that we can enter the data, whatever we have to write, we can write there, whether we have to write in 2D or in 3D, the same steps are to be done, and after writing it, we have to click outside the box. So after doing this, what will happen? The 2D text will be inserted if we have selected 2D text option, and 3D text will be inserted if we have selected the 3D text option. Now write steps to create 3D shapes. So for creating the 3D shapes, we have to click on the 3D shapes option given on our menu bar, and from there a list will come. From that we have to select the the shape that we want. Then we have to drag that on the canvas, and then we can change the color of that 3D shape, and also we can rotate it according to our choice. So after creating the 3D shape, from there we have to click outside, somewhere outside the box, and the shape will be created. We have to click on this commit button after creating the 3D shape. So children, this was all for today. In this video, I'll be waiting for you in the next video. Till then, stay lit.